Test taking strategies. To improve test taking skills, there are three approaches that might prove fruitful. अच्छा टेस्ट लेने के लिए जो महारतें हैं उनमें तीन अच्छी अप्रोचेस जो हैं वो बता रहे हैं हम आपको, माइट प्रूव फ्रूटफुल, जो कि मुफीद साबित हो सकती हैं. स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स ऑफ टेस्ट टेकिंग. स्टूडेंट्स को टेस्ट लेने के लिए जो मैकेनिक्स है, तरीक़ाकार है, उसको समझना चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है. सच एज द नीड टू बी केयरफुल फॉलो इंस्ट्रक्शन. जैसे कि जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं उनको भी एहतियात के साथ समझने की ज़रूरत होती है. चेकिंग देयर वर्क, उनका काम चेक करना, एंड सो फोर्थ, और इसी तरह. Second, they need to use appropriate test-taking strategies, including ways in which test items should be addressed and how to make educated guesses. Finally, they need to practice their test-taking skills to refine their abilities and to become more comfortable in testing situations. By acting upon the following strategies, the student may enhance their test-taking strategies. स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो डायरेक्शंस केयरफुली. स्टूडेंट्स को डायरेक्शंस जो हैं वो एहतियात के साथ उनकी पैरवी करनी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए. स्टूडेंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू बजट देयर टाइम. स्टूडेंट्स को इस चीज़ के समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने टाइम जो है वक्त कैसे इस्तेमाल करना है. स्टूडेंट्स नीड टू चेक देयर वर्क. स्टूडेंट्स को उनका काम चेक करने की ज़रूरत है. फॉर ईच आइटम, students need to read the entire test item and all the possible answer very carefully. Test taking strategies. Answer the easier questions first. पहले जो है वो आसान सवालात जो है वो चेक करें and persist to end of the test. Student need to make educated guesses. Use test item format for practice. Review the practice items and answer choices with students. Practice using answer sheets. Steps to prevent cheating. Cheating जो है वो रोकने के लिए, नकल रोकने के लिए आपने क्या करना है. Cheating is a big issue while administrating tests to get reliable and valid data of student learning achievement. Cheating जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है जब आप टेस्ट लेते हैं और स्टूडेंट्स की जो लर्निंग अचीवमेंट्स हैं, पढ़ने के हवाले से, सीखने की जो कारकर्दगी है उसको गैस करने के हवाले से, अगर आप रिलायबल और वैलिड डेटा हासिल करना चाहते हैं तो उसमें चीटिंग एक बहुत बड़ा मसला है. फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलो टू प्रिवेंट चीटिंग. चीटिंग को रोकने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करें, उनकी पैरवी करें, उन पर अमल दरामद करें. Take special precautions to keep the test score during preparation, storage and administration. स्पेशल एहतियात करें जब आप टेस्ट बना रहे होते हैं या फिर उसको किसी जगह पे स्टोरेज उसके कर रहे होते हैं, उस जगह रख रहे होते हैं या फिर उसको आप ले रहे होते हैं. Students should be provided sufficient space on their desk to work easily and to prevent use of helping material. स्टूडेंट जो हैं उनको सफिशेंट स्पेस चाहिए, एक मुनासिब जगह चाहिए ऑन देयर डेस्क, उनके डेस्क पे टू वर्क, काम के लिए, टू वर्क इजली, ताकि वो आसानी के साथ काम कर सकें. एंड टू प्रिवेंट यूज़ ऑफ हेल्पिंग मटेरियल, और जो हेल्पिंग मटेरियल है उसके इस्तेमाल से भी उनको बचाया जा सके. इफ़ द स्क्रैच पेपर इज़ यूज्ड, have it turned in with the test. अगर स्क्रैच पेपर यूज़ हो चुका है तो उसको आप टर्न कर दें विद टेस्ट के साथ. टेस्टिंग और मस्ट बी वॉच्ड केयरफुली. टेस्ट के जो घंटे हैं या टेस्ट का जो दौरानिया है उसको एहतियात के साथ आपने देखना है. वॉक अराउंड द रूम periodically and observe the student what they are doing. वक्फे के साथ स्टूडेंट का जो कमरा है उसमें आपने वॉक करना है और देखना है कि स्टूडेंट क्या कर रहे हैं. 2 forms ऑफ द टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड. 2 तरह के टेस्ट जो हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. और यूज सम
atoms different in the test to prevent cheating, या फिर आप डिफरेंट सवाल जो हैं वो ये एटम्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं चीटिंग से बचने के लिए। यूज स्पेशल सीटिंग अरेंजमेंट, खास सीटिंग अरेंजमेंट करें वाइल प्लेसिंग द स्टूडेंट फॉर द टेस्ट, जब आप स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बिठा रहे होते हैं। प्रोवाइड सफिशिएंट एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दरमियान मुनासिब जगह होनी चाहिए। Create and maintain a positive attitude concerning the values of test for improving learning. Scoring objective test items. If the student answers are recorded on the test paper itself, अगर स्टूडेंट ने आंसर जो जवाब हैं वो खुद दिए हैं टेस्ट पेपर पे, ये स्कोरिंग की कैन बी मेड बाय मार्किंग द करेक्ट आंसर ऑन ब्लैंक copy of the test. Scoring then is simply a matter of comparing the columns of the answers on this master copy with the column of answer on each student's paper. A strip key which consists merely of strips of paper on which the columns of answers are recorded may also be used if more convenient. These can easily be prepared by cutting the columns of the answers from the master copy of the test and mounting them on strips of cardboard cut from manila folders. When separate answer sheets are used, जब अलग से शीट्स इस्तेमाल होती हैं, a scoring stencil is more convenient. This is a blank answer sheet with holes punched where the correct answers should appear. The stencil is laid over the answer sheet and the number of answer checks appearing through holes is counted. When this type of scoring procedure is used, each test paper should also be scanned to make certain that only one answer was marked for each atom. Any atom containing more than one answer should be eliminated from the scoring. कोई भी जवाब ऐसा है जो कि एक से ज़्यादा दफ़ा किया गया तो उसको आपने स्कोरिंग के अंदर शामिल नहीं करना। As each test paper is scored, जब तमाम पेपर के नंबर लग चुके हैं, mark each atom that is scored incorrectly. मार्क करें उन एटम्स को, उन सवालात को, उन जवाबात को जो कि गलत किए गए। While multiple choice items, a good practice is to draw a red line through the correct answer of missed atoms rather than through the student wrong answer. This will indicate to student those atoms missed and at the same time will indicate the correct answer. Time will be saved and confusion avoided during the discussion of the test. Marking the correct answer of the missed atoms is simple with the scoring stencil. When no answer check appears through a hole in the stencil, a red line is drawn across the hole. In scoring objective test, each correct answer is usually counted as 1 point because an arbitrary weighting of atoms make little difference in the student final score. If some atoms are counted 2 points, some 1 point and some half point, the scoring will be complicated without any accompanying benefits. Scores based on such weightings will be similar to the simpler procedure of counting each atom on 1 point. When a test consists of a combination of objective atoms and a few more time-consuming easy questions, however, more than a single point is needed to distinguish several levels of response and to reflect disproportionate time devoted to each of the essay questions. When students are told to answer every atom on the test, a student's score is simply the number of atoms answered correctly. There is no need to consider wrong answer or to correct for guessing. When all students answer every atom on the test, the rank of the student's score will be same
whether the number is right or a correction of guessing is used. A simplified form of atom analysis is all that is necessary or warranted for classroom test because more classroom groups consist of 20 to 40 students as a especially useful procedure to compare the responses of the 10 lowest scoring students. As we see later, keeping the upper and lower groups and 10 students each simplifies the interpretation of the result. It also is a reasonable number for analysis in groups of 20 to 40 students. For example, with a small classroom group like that 20 students, it is best to use the upper lower halves to obtain dependable data. Whereas with a larger group like that of 40 students, use upper and lower 20% is quite satisfactory. For more refined analysis, the upper and lower 27% is often recommended, and most statistical guides are based on that procedure, that percentage. To illustrate the method of atom analysis, suppose we have just finished scoring 32 test papers for a 6th grade science unit on weather. Our atom analysis might then proceed as follows. Scoring objective test atoms. Rank the 32 test paper in order from the highest to lowest score. 32 पेपर जो हैं उनको तरतीब दे लें ज़्यादा नंबर वालों से थोड़े नंबर वालों की तरफ. Select the 10 paper within the highest total scores and 10 paper with the lowest total score. उसमें से 10 पेपर 32 में से 10 पेपर ऐसे सेलेक्ट करें जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं और 10 ऐसे पेपर सेलेक्ट करें जिनके सबसे थोड़े नंबर हैं. Put aside the middle 12 papers as then will not be used in the analysis. उसमें से जो 12 पेपर दरमियान वाले हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना एनालिसिस में, उनको एक साइड पे रख लें. For each test atom, tabulate the number of students in the upper and lower group who selected each alternative. फिर एक टेबल बना लें, उसमें आपने नंबर देने हैं स्टूडेंट्स के जो कि अपर और लोअर ग्रुप्स के थे, उनको अल्टरनेटिव लिखना है. This tabulation will be made directly on the test paper or on the test atom card. Compute the difficulty of each atom, percentage of the student who got the atom right. Compute the discriminating power of each atom, difference between the number of students in the upper and lower groups who got the atom right. Evaluate the effectiveness of distractors in each atom, attractiveness of the incorrect alternatives. Although atom analysis by inspection will reveal the general effectiveness of a test atom and is satisfactory for most classroom purposes, it is sometimes used to obtain a more precise estimate of atom difficulty and discriminating power. This can be done by applying relatively simple formulas to the atom analysis